Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good afternoon. Your class is over? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, previous class is over, right? Yes, ma'am. Okay. So you have your mid semester from Wednesday, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I think we have completed the string question of recursion. We have completed it. String reversal. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. String reversal. The string reversal is not done, right? Okay, I will show you the string reversal, and then we will discuss some of the questions of that time complexity. There I made a mistake. Okay, we will repeat it again in the calculation part. Okay, then we will move to the partition of the algorithm. I think it is question number 17, isn't it? Question number 17 also we have not discussed. Assignment 3. The last question. Gurman, you are asking for it now? Last question? This one? Yes, ma'am. Question number 17. Question number 17. So we will discuss it. So first let me complete this one. How to reverse a string. So reverse an array तो Ma'am, मैंने बता दिया. share your screen. Share your screen. Just okay. Just a minute. I will share the screen right now. Check. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Check the screen. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, so this one is your reverse of a string. I have not written the code for the palindrome, only the reverse of a string. So here in the reverse string function, यहाँ पर हम लोग को substring लेके करना है. Here we need to go with the substring method in order to compute the reverse string. यहाँ पे देखो इनिशियली वी आर सेटिंग, अगर वो स्ट्रिंग यार एस में क्या स्टोर होगा, इन एस वी आर गोइंग टू स्टोर हेलो. सो हम लोग को एक करके निकालना है. कब तक? वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम द स्ट्रिंग अंटिल एंड अनलेस द स्ट्रिंग बिकम्स एम्प्टी. जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाता है हम लोग को वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस. एस से एक कैरेक्टर निकालना है. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड इट आउट, in order to find it out यहाँ पर लिखना है s dot substring 1. so s dot substring 1 means s में अभी कौन सा वैल्यू स्टोर है? what is the value here in s? हेलो है. so return reverse string s dot substring 1. तो 1 मतलब it will start from e l l o, then append क्या होगा? h. so this part linear sum binary sum तुम लोगों का हो गया था ना? check it here. I am just minimizing it so that I can write at this end. ये देखो for this part
Okay, is it visible to all of you, the code part? Yes. Yes, ma'am. Okay, now so when I am going to call this function, यहाँ पर reverse string call करेंगे. Reverse string. Within reverse string, the word we are going to provide here is hello. So यहाँ पर what is the value of s? Hello is equals to null. The condition here is false. So if the condition here is false, we are going to return reverse string. Reverse string s dot substring 1. So substring 1 मतलब it will count from ELLO plus character at s dot char 0. So char at 0 here is h. Again for this function, we need to write in this manner. Reverse string. यहाँ पर क्या होगा? E चला जाएगा LLO. So LLO फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? Plus E. E. So similarly, again यहाँ पर reverse string LO plus L. Reverse string O plus L. And for this one, reverse string बस एक ही कैरेक्टर है तो यहाँ पर empty string आ गया and here O. So when we are having the empty string return क्या करेगा? We are going to return the string. तो यहाँ पर return S. This S value we are going to return. S means क्या है? Empty string. Empty string. So empty string में पहले क्या append होगा? Plus O. O यहाँ पर गया. O के बाद क्या आ जाएगा? Appended with L. So this string will return OL. इसके साथ append क्या होगा? This L. Again ये return करेगा OLL. So यहाँ पर append हो गया E. It will return here OLLEH. So it will be finally returned to the method. So when you are going to call the program run करोगे, यहाँ पर output क्या आ रहा है? OLLEH. तो यहाँ पर in the main function you need to only write which function? Equals का function याद है? You remember the function? If s dot Equals. यहाँ पर क्या लिखूं? Not provided now. String s is equals to or s1 is equals to hello. If I'm going to pass here s1, so here string s2 is equals to reverse string s1. यहाँ पर आ जाएगा s1 dot equals s2. S2. Okay, and system dot out dot println Palindrome S2. palindrome else println not equal. Not palindrome. Dot out dot. यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया? नॉट पैलिंड्रोम 101. यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? The string is palindrome. Okay.
So in this way, we can check for the reverse of a string. Okay. So should I go to the time complexity analysis? Ma'am, wait a minute. Okay, note it down. All of you got your result yesterday? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So give focus on your coming semester examination, midterm and your final semester. Should I move to the next part? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yeah. Comes to the analysis. So always remember, if we have nested loop, okay, so in nested loop, if we are having two loops for I equals to 1, I less than n, I plus plus, and there is one inner loop j equals to 1, j less than n, j plus plus. If both the loops are independent of each other, अगर दोनों loop independent है, here we are checking for the value of n. Again, the loop statement, it always depends on this conditional check and also in this update statement check. So depending on this value, we are going to compute the time complexity of the algorithm. Means how many times we are going to check a particular statement is going to be executed. And वो statement कौन सा loop का कौन सा part होना चाहिए? The statement is the present in the Innermost loop. innermost loop. Okay, the statement must present in the innermost loop. So if the loops are independent, यहाँ पर I का value किसके ऊपर depend है? And N. Input. And here the J का value भी N के ऊपर depend है. Then we can easily say that it is your N square times. Okay, so but when we have some dependent loop, int I is equals to 1, I less than n, I plus plus, and this is another example, int j is equals to 1, j is less than I, j plus plus. Okay, now here the statement is dependent, inner loop is dependent on which loop? outer loop. Outer loop. So here the inner loop is dependent on the outer loop. So if the value of I is 1, J will not execute, inner loop execute नहीं कर रहा है. Yes, ma'am. Okay, so if my value of I is 2, J is executing for one number of time. If my value of I is 3, now J कितने बार execute होगा? It will execute for 2 number of time. Now let my n value here is 5. If the value of I is 4, now J loop will execute for 3 number of time. So when my I value is 1, J is executing for 0 time, I2 हो गया 1 time, I3 हो गया 2 time, I4 हो गया 3 time. So overall it is, we are saying that it is executing for n plus 1 by 2 number of time, isn't it? I'm telling about the inner loop.
So we are saying that the inner loop will execute for n plus 1 by 2 number of time. If my number of और I value is what? n. अगर outer loop का value n है तो inner loop का value कितने बार execute होगा? For how many number of time you are executing the inner loop? n minus 1. N into n plus 1 divided by n into n plus 1 divided by क्या होगा? 2. 2. It's n square by 2 plus n by 2. So highest degree क्या है? Which is the highest degree? N square. N square. So we are blindly saying that my loop is of what much of time? It will take n square amount of time, isn't it? So here I will give you another question. For int I is equals to 1, I is less than n, I plus plus, for int j equals to 1, यहाँ पर less than equal to कर देते हैं, j is I j plus plus, and here I am having some statement. Now can you tell me here the inner loop is dependent on which condition? I square. Just a minute, here I less than 1, I less than 1 करो, I equals to 1 करो, it doesn't matter. Okay, less than equal to ही रहने दो, just we will have less than equal to or less than n. So outer loop कितने टाइम रन करेगा? n times. n टाइम्स. यहाँ पर I का वैल्यू कितना है? Square. Square है. So if my I is 1, now j loop will go from 0 to N into n plus 1. j less than 2. When my I value is 2, j 1, 2, 3, 4. I value 1 होगा तो J खाली 1 के लिए ही रन होगा ना? हाँ, की बात है। हाँ, I into I, हाँ, j value will run for one time. It is 1 to 1. I का value 2 हो गया, then j will run for 4 times. 4 times. 4 times. 3 times. So यहाँ पर मैं less than equal to क्यों? I have not put it less than. यहाँ पे मैं condition क्या दी हूँ? Less than Less than equal. Less than equals to. So if my value of I is 3, then j loop will run for 9 times. 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so if I value is 4, then j will run for 16. 16 times. 16 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 times. So j loop is going to run for how many number of times? 16 number of times. So what will be the total statements here you are going to execute? 1, 4, then 9, then 16. 16. 16. So it is going to be in this manner, na? N square. M n into into n plus n N into N square. n plus 1. m square और n square ले लो. N into n plus 1 divided by 2. देखो तो कुछ गलती हो गया क्या? What is the value of n? I का value 2. So 2 में कितना आ रहा है? 2 into 2 plus 1, 3 divided by 3.
Okay. n into n plus 1 by 2. Yes. हाँ बोलो. मैम जब सीरीज का सम निकालते थे तो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 आता था. Yes, कहाँ ma'am. पर? हाँ सीरीज में सीरीज का फॉर्मूला बोलो. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n into 2n plus 1 by n into n plus 1 into 2n plus plus 1 2n plus 2 divided by by divided by 6 तो yes ma'am. हाँ that will be the value of the series. Eraser. You are saying that it will be n into 2n plus n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay, I am not telling about the entire series. I am just saying about which loop. Even mostly. I am just now focusing on the inner loop. मैं outer loop को नहीं गई हूँ अभी तक. So if we will include both the loops, the formula you are going to have this one. Okay. I am not right now. I have not in the outer loop. So यहाँ पर कितना आ रहा है? I am just telling about when my I value is 1. I का value जब 1 है, it is executing for. तुम्हारा स्टेटमेंट यही होगा ना, I equals to 1 to n. Then you are having here I equals to I into n, I into I, isn't it? J equals to. And here you are having some. Yes, ma'am. J equals to 1 to I square. हाँ, here you are having some statement. So ये outer loop कितने बार रन हो रहा है? n times. The outer loop is running for n number of times, and the inner loop it is वो कितने बार रन होगा? Inner loop ये कितने बार रन होगा? n into ये तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला है. I am not just doing that overall one. It is going to be executed for this number of time. Okay, when my I is 1 और ये I का वैल्यू जब मेरा 1 ले रहे हैं तो कितने बार लूप एग्जीक्यूट हुआ? One time. If I value is 2, the loop is executed for 4 times. 4. I is 3, my loop executed for 9 times. I is 4, 16 times. So if my I value is n, so it is this one. And overally we will tell this formula. It is n into n plus 1. ये पूरा को जब reduce करोगे, you will going to get this formula. Are you getting my point, or you are in confusion mode? I'm confused. Confused हो गए हो. I'm just erasing this part. ये part मैं erase करती हूँ. Again I am writing it. Check it here. इसको मैं फिर से लिख रही हूँ. हाँ बोलो. मैम यहाँ पे it's like 1 plus 2 square plus 3 square plus 4 square आ रहा है ना, तो उससे तो हाँ, it is. I am just writing. It is यहाँ पर क्या आ रहा है पहले? You are getting 1 or 1 square. Again you are getting 2 square. When my I value is 3, यहाँ पर कितना आ गया? 9. Then next value is 16. what is the next value? 16. 16. So ये 3 square हो गया. ये हो गया कितना तुम्हारा? 4 square. Okay. ये 4 square हो गया. तो ये कब तक चलेगा? n square. N square. Okay, overall we can say it n square or n square number of times, or can I say it okay ले लो, n square तक चलेगा. Then outer loop कितने बार चलेगा? The outer one. If my value of I is n times. n times. Okay. So ये overall आंसर कितना आएगा? And What will be the overall value?
n n into n plus 1 divided by 2. n into n plus 1 So overall, we can say that it will run for how many number of times? n cube times. How many number of times it is going to be run? n cube time. N cube times. So n cube, or we can say it is n into n plus 1 divided by 2. Okay. So the I loop, n square, ये formula गलत हो रहा है. So you say that it will run for n cube number of times. Okay. Again, कहीं पर एक mistake हो गया. No. Okay, just remember this one. The inner loop यहाँ पर कितने बार run हो रहा है? This is the formula. I equals to 1 to outer loop will run for I equals to 1 to n, and j part will run for I j equals to 1 to यहाँ पर कितना हो गया? What is the value here? This inner loop कितने बार run करेगा? I square times. I square times. So I square times, here you are having the statement. So overally we will say it, ये कितना हो जाएगा? n into n square. So n into n square कितना हो गया? n cube. What will be the value? अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के जगह if instead of into, if you are going to have here I divided by 2, then क्या होता? What will be the answer? n n times. सोच के बताओ. What will be the answer? n into log base 2n. n into Log base 2n. log base 2n. Okay, because यहाँ पर I का वैल्यू क्या हो रहा है? I का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है? What you are doing? For this case, or particularly this case, what will happen? When my I, big of I now. huh? Ma'am, this code will also work for big of I only, because ma'am, the increment part is still plus only. It is not dividing the value. Only the No, it is conditional not. part. we have to do. No, it is not dividing the value. Ma'am, then how log? I equals to 1. यहाँ पर j का वैल्यू कितना हो रहा है? What is the value of j here? J will run for how many number of times? 0. 0. 0. I equals to 2. Then j will run for 1. 1. I equals to 3. J will again run for 1. 1. I equals to 4. J will run for कितना बार रन करेगा? 2. एक 1 के लिए रन करेगा, दूसरा 2 times. 2 times run करेगा. So what will be the answer? What will be the answer here? So for I is equal to 2.
What will be the answer here? If my I value is, let here n value is 6, I equals to 5 हो गया, J कितने बार रन करेगा? 25 times. 5 times. I equals to 6, J कितने बार रन करेगा? 3 times. तो ये n times रन कर रहा है क्या? Is it running for n number of times? No ma'am, n by 2 times. n by 2 times हो रहा है. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है? Every time inner loop it is running for how many number of times? Inner loop कितने बार रन कर रहा है? I by 2 floor value. Floor value. So here 0 plus 1 and I value is 0 plus 1 plus यहाँ पर आ गया 2, फिर आ गया 2, फिर 1 2 3 times आ गया. Okay, so it is running for, so it depends, ये कहाँ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? It is depending on which value? I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? Ma'am, the time complexity of whole code will be n square only. हाँ, n square होगा ये. हाँ, inner loop ये कितने बार रन हो रहा है? n by 2. Then outer loop n times. n times. So यहाँ पर क्या करोगे? Multiply. करोगे. अगर यहाँ पर j plus 1 के जगह, now if another statement here is j is less than, ये और एक प्रॉब्लम है, ये अच्छे से देख लो. j is less than or I less than n, j less than n, and here j is equals to j into 2 and j equals to I. ये कितने बार रन करेगा? j less than n, I less than n, j equals to I, j into 2. How many number of times the loop will run? The statement is going to run? Ma'am, n log n. Hmm? Ma'am, inner loop will run till log n times. And outer Inner loop loop will run n times. Inner loop log n times run करेगा? देख के बताओ. यहाँ पर j equals to initialization statement क्या है? What is the initialization statement here? J equals to क्या है? यहाँ पर j equals to I है. If instead of I यहाँ पर 1 होता तो आंसर क्या आता? Log n. n log n. लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 के जगह क्या है? What is the value here? j into 2. So when my I value is 1, j कितने बार रन करेगा? j less than, let my n value is 5, j less than 5 and j equals to j into 2. तो बोलो how many times it is going to run? I equals to 1, j कितने बार रन करेगा? वर्क इट आउट, मुझे आंसर बताना. n log n में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा?
नो मैम, नॉट लॉग इन। लॉग इन में नहीं आएगा। ओके, तो किसमें आएगा? मैम एन स्क्वायर। एन स्क्वायर भी नहीं होगा। n square by 2. नो, सोचो, यू जस्ट थिंक ऑफ इट। वैल्यू पुट करो, देखो i इक्वल्स टू कितना है? j is 1, j less than 5, j equals to j into 2। जब 1 होगा कंडीशन सेटिस्फाई, इट विल एग्जीक्यूट। j कितना हो गया? 1 into 1 2, 2 less than 5, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर कितना हो गया? 4। i 1 हो रहा है, ये कितने के लिए रन कर रहा है? j वैल्यू विल रन फॉर 1, 2 and 4। when my I value is 2, j 2 and 4, I value is 3, j का वैल्यू कितने पे रन करेगा? 3 and 6. 3। when my I value is 4, j value will run for, j रन ही नहीं करेगा, है कि नहीं? So what will be the output here? What will be the output here? For int I equals to 1, I less than 5, I plus plus. For int j equals to I, j less than 5, then j equals to कितना है? What is the update statement? j into 2, system dot out dot println j। ये है ना केसेस? Is this the other cases? Are you there? Yes मैम। हाँ बोलो। So how many times the loop will run? What will be the overall time complexity? यहाँ पर 5 into 5 होता तो कितना आंसर आता? 10। लेकिन यहाँ पर लूप कितने बार रन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 7। यहाँ पर देखो तो log base to n डालो तो वैल्यू, n का वैल्यू कितना है? log base to 5 into log base to पॉइंट समथिंग। यहाँ पर 1 point something आ रहा है ना? नो मैम, 2 पॉइंट समथिंग। यस, 2 पॉइंट समथिंग मैम। 2 point something। 2 point something मतलब ये कितना आ जा रहा है? कितना आ रहा है यहाँ पर? 10 आ रहा है। यस मैम। 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है क्या? इज इट एग्जीक्यूटिंग फॉर 10 नंबर ऑफ टाइम्स? यहाँ पर ओवरऑल कितने बार एग्जीक्यूट कर रहा है? देखो, अब देखो 5 into 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है।
Is it executing for 10 number of times? तो ये फॉर्मूला ये आर यू गोइंग टू कंप्यूट इट इन टर्म्स ऑफ n log base to n? n log base to n के साथ जाएगा? मुझे पता ना, सोच के. ओके, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मैं हेल्ड में रखती हूँ, मुझे सोच के बताना. No, ma'am. You take your time. I will tell the answer at the end of the class. और दो प्रॉब्लम करते हैं, then we will move back to this question. आंसर कितना आएगा मुझे थोड़ा सोचो. You take your time. I equals to 1, I less than n, I plus plus. For j equals to 1, j less than n, j equals to j into 2. So what will be the answer? Check it. मैम वो 3 कैसे आ गए प्रोग्राम में? प्रोग्राम में 3 कैसे आ गए? कहाँ पर? यहाँ पर. ओके मैम, ओके, दिस इज आई वैल्यू, सॉरी. हाँ, this is नहीं, this is not the I value, this is the J value. Here it is the value of J. Means here you are just computing how many number of times the loop is executing, isn't it? ओके मैम. Okay. यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार एग्जीक्यूट कर रहा है. तो यहाँ पर कितना है? n का वैल्यू तुम्हारा 5 है. 5 लेस देन 5 ले रहे हैं हम लोग. I कहाँ से शुरू कर रहे हैं? I कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है. यस मैम. ओके, log बेस 2. अरे यहाँ पर आंसर आ रहा है, मना क्यों कर रहे हो? यहाँ पर कितना है I का वैल्यू? I equals to, ओके, सो यहाँ पर I equals to 1 के लिए एग्जीक्यूट किया. J when my value of J is 1 के लिए आंसर क्या आएगा? 1 2 4. ओके, when my I value is 1, when my I value is 2, आंसर कितना आएगा? 2 4. I value is 3, आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. When I value is 4, यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 4. Okay, so I am asking how many number of times this loop is executing? J2 into J. Answer मुझे पता है, I know the answer, but I am just you just analyze it. How many number of times it is executing? मैं फिर बताऊंगी. Then I will tell you the answer. Now come to this statement. This question. Question number ये वाला. इसका आंसर कितना आएगा? मैं 9 to the power 5. इसका ये कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? I equals to 0 से n तक जाएगा. Now this loop will run for how many number of time? J equals to 0 to I square. I square time, and this loop will run for k equals to 0 to j times आ रहा है. So let ये loop जाएगा कितने बार? If it is going to run for, I am just telling about k loop. K loop कितने बार रन होगा? J times. J times, let it be n time. अगर j का वैल्यू n है, ये कितना हो गया? n स्क्वायर. यहाँ पर j इक्वल्स टू 0 और ऊपर से चलो I का वैल्यू n है. So j loop will run for how many number of times? N square. यहाँ पर I into I, तो n स्क्वायर टाइम. अगेन k is dependent on J. j, तो ये भी कितने बार रन होगा? N square times. n स्क्वायर टाइम्स. तो ओवरऑल कितना होगा? n into n स्क्वायर into
n square. So what will be the final answer? n to the power 5. We go of n to the power 5. इसका भी आंसर चेंज होगा. ओके, ये कितने बार रन होगा बताओ? द लास्ट स्टेटमेंट. द लास्ट वन. I equals to 1 to n टाइम गया. ये कितना जाएगा? What will be the answer for this one? वो तो into the power 5 होगा. ये कितने बार रन करेगा? ये लूप कितने बार रन करेगा? आई लूप n times n टाइम्स. जे लूप n square n स्क्वायर. के लूप log base to n. ये गलती हो गया. के लूप Then less than j times. Less than j time. I mean less than n square time. n स्क्वायर टाइम नहीं होगा. Ma'am, it will not run exactly n square times, but less than n square time. This if statement it is going to run for n square number of times. ठीक है? Yes, ma'am. The innermost k loop ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? It is depending on which value? J. J value. अगर J यहाँ पर कितने, ये this if statement it is going to run for how many number of time? n square time. But यहाँ पर ये कितने टाइम रन कर रहा है? Whenever j is divisible. Okay, so it will run for how many number of times? J number of times. Okay, for example, here I am going to take, let my I value is 10. Okay, for this case, if my n value is 10, my J loop will run for I 10 है तो J कितने बार रन करेगा? If my I value is 10, my J loop will run for how many number of time? 100. 10 into 10 कितना हो गया? 100 minus 100 टाइम रन करेगा. बट के लूप कितने बार रन करेगा? 100 mod 10 कितना हो गया? 10 times 10 times. So the inner loop will run for कितने बार रन करेगा? 10. What is the value the inner loop will get run? यहाँ पर मॉड ऑपरेटर है. अगेन आई एम राइटिंग हियर. यहाँ पर मैं फिर से लिख रही हूँ, देखो. I is 10. ओके, J कितने बार रन करेगा? J will start from 1 to कितने बार गया? How many times the J loop will run from? Will run for 100 number of times. ओके, यहाँ पर 100 mod 10 कर दो. कितना हो रहा है? J equals to 1. 1 mod 10. 1 mod I का वैल्यू कितना है? 1 mod 10 रन करेगा.
Are you getting my what I want to speak? Are you getting the point, or you are not getting the point? बस इतना बोलो, ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई जे मॉड आई है जो वैल्यू, ये तो Yes, ma'am. ये n रन करेगा, ये n स्क्वायर टाइम रन करेगा. But I am just telling about this loop. Here the time complexity will be not big O of n to the power 5. यहाँ पर big O of n to the power 5 नहीं आएगा. Okay? Because यहाँ पर क्या statement है? What is the statement here? modular मॉड्यूलो ऑपरेटर है. सो मॉड्यूलो ऑपरेटर है तो ये क्या कर रहा है? डिवीजन. डिवीजन मीन्स अगर n स्क्वायर होता तो वो क्या करेगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द इनर लूप, दिस के लूप विल रन? n square by I. ये जो वैल्यू है ये कितना ओवरऑल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. नाउ लेट इफ माई वैल्यू ऑफ n तुम्हारा ले लो 5, n का वैल्यू 5 है. ओके, j इक्वल्स टू 1 हो गया. यहाँ पर j लेस देन i का वैल्यू जब 1 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ i एम राइटिंग हियर द कोड. आ गया where I have done the changes. Okay, so when I have the mod operator, the number of times the inner loop will execute हो जाएगा कितना? हाफ हो जाएगा. Okay, just remember it will remain half. तो multiply कर दो n into n square into n. So overall ये कितना हो गया? Big O of n to the power 4. For example, if my I value is 10, J loop कितने बार रन होगा? J will go for 10 into 10. 10 into 10 कितना है? 100. But my this 100 times ये कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? This if statement, it will execute for n into n times. But here the k value is dependent on which value? J. J k किसके ऊपर डिपेंड है? J का वैल्यू के ऊपर k डिपेंडेंट है. So as the k value is dependent on the J value, तो यहाँ पर कितना टाइम्स रन होगा? Just half of the time. Because ये कंडीशन ट्रू होगा तो तुम यहाँ अंदर आओगे. Okay, so it will only take how many number of time? It will go for n number of time. Okay, यहाँ पर i square है, ये i by 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? n तक ही जाएगा. So the overall it will take n into n square into n. So it will be big O of n to the power 4. But here we don't have in this statement. यहाँ पर हम लोगों का और कुछ additional statement है? Does I have any statement here? No, ma'am. In this example, I don't have any if statement. So इसीलिए ये k loop किसके ऊपर directly dependent हो रहा है? This k loop is directly dependent on the outer loop j. तो ये जितने बार भी रन करेगा, it is n square time. So ये लूप भी कितने बार रन करेगा? n square time. But in this case, यहाँ पर क्या हो रहा है? This loop, ये जो loop है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? On which statement? In the outer loop, outer j loop, or with the if statement? if statement As it is depending on the if statement में condition क्या है? What is the condition here? मॉड्यूलो ऑपरेटर है. मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब अगर 10 होगा तो कितने बार एग्जीक्यूट करेगा?
अगर i का वैल्यू यहाँ पर i का वैल्यू 10 है तो ये कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? If by value of I is 10, then k will execute for how many number of time? 10 times. 10 टाइम. तो ये n है तो k कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? N times. 10 टाइम्स करेगा. तो अगर हाँ, सो इट विल एग्जीक्यूट. तो आउटर लूप जितने बार रन करेगा, ये इनर लूप कितने बार रन करेगा? ये n टाइम्स जाएगा. तो ये कितने बार जाएगा? सो इट इज डिपेंडिंग ऑन विच वैल्यू? k इज डिपेंडिंग ऑन विच वैल्यू? k किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ आई. वैल्यू ऑफ i. सो अगर k वैल्यू ऑफ i के ऊपर डिपेंड हो रहा है तो ये हो गया k का वैल्यू, ये हो गया i का वैल्यू. लेकिन j n स्क्वायर. n स्क्वायर. सो ओवरऑल कितना होगा? n4. Sorry, we go of n to the power 4. Okay. Now similarly this is the case. ये उसी का केस है. यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर कितना होगा? Are you clear with this one? ये समझ में आया या फिर डाउट है अभी भी? n to the power 4 क्यों हुआ? यश, यश, are you there? Yes, ma'am. ये this line, are you clear with this line? Why it is n to the power 4? I'm not getting that line, that how if I equal 10, then it will work 10 times. Yes, हाँ, it will depends on the which loop. ये as it is the modulo function, so ये क्या हो रहा है? ये किसके ऊपर डिपेंड हो जा रहा है? It is depending on the ये मॉड्यूलो फंक्शन है ना, ये मॉड्यूलो फंक्शन है. सो यहाँ पर i स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम मॉड कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? It will just reduce the time by how many number of time? It will depend on the value of I. तुम पुट करो यहाँ पर 5 लो. अगर ज्यादा डाउट हो रहा है, you just go with 5 here. यहाँ पर I के जगह accordingly take the 5 and you count total कितने बार execute हो रहा है. Then you will check that this inner for loop is taking the same amount of time जो outer loop ले रहा है. And this one intermediate loop, it is going for n square number of time. Yes, ma'am, I got it. Okay. Yes, ma'am. So if another one, और ये वाला याद रखो, if you are having this one, if I equals to 1, I less than n, I plus plus, and here for j equals to I और j equals to 1, यहाँ पर j less than n by 2, ये वाला हम लोग किए ना अभी. Yes, ma'am. ये कितने बार रन करेगा? N square. It will also go for n square number of times. Okay, because ये inner loop n by 2 number of times जाएगा and the outer loop will run for n times. So it will be n into n by 2. अगर यहाँ पर j into 2 हो गया तो कितने बार रन करेगा? N log And ये हो गया n. This is your n. तो कितने बार रन करेगा? N log n. n log n. अगर यहाँ पर हो गया I, then Calculating, ma'am. अगर यहाँ पर I आ जाता है, it will go for big O of n times.
चेक दिस वन, यहाँ पर है I, ये कितना है 5, यहाँ पर कितना है, हाँ दिस इज ओके. So it will go for almost big O of ये वाला big O of n times. This will go for big O of n times, or you can say it will be approximately n big O of n times. n times ही जाएगा. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.